Welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है विनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है द अनसीन ट्रूथ ऑफ इंडिया वर्ल्ड नीड टू नो और इनके चैनल का नेम है वर्ल्ड इन डिटेल्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। टाइटल और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। What is the first image comes to your mind when you hear the name of India? Like this or this, right? Because your media mostly present such similar images of India in front of you. Okay, let me show you something different than your media. If I say this is India, will you believe me? Maybe not, because most probably you have never seen India in this way. But actually, this is real India which has been hidden from you. The slums, busy and chaotic cities you see on TV or mobile is only a smallest part of India. India is actually pretty normal. And this is the one thing that a lot of people don't understand about India. Okay, let me show you some major cities of India. This is Mumbai. This is Delhi. This is Kolkata. This is Gurgaon. This is Noida. This is Hyderabad. This is Pune. This is Bangalore. This is Chennai. This is Surat. This is Thane. And there are many such modern cities in India. थाने में भी रिएक्शन करेंगे यार। Okay, let's come to the rural part of India, and I'm pretty sure that according to you, the Indian villages are look something like this or this, right? But actually, this is not even 5% part of Indian villages. More than 95% of Indian villages are look something like this. Due to the large population of India, the Indian villages are also so big. Look at this. This is not a city or town, but it's a village called Madhapar, located in the Indian state of Gujarat. After a lot of struggle in 1947, when India got independence from the British Empire, India's economy was only $25 billion. Even in 1991, India's economy was less than the economy of Paris and London. And now India has more economy than the France and the UK. In 2014, India's economy was ranked 10th in the world, but now in 2022, India has become the 5th largest economy in the world with a huge GDP of $3.5 trillion. In just last 8 years, India has overtaken 5 major economies like Canada, Russia, Italy, Brazil, France and the UK. And this is really impressive. India is the fastest growing major economy in the world, and according to IMF, India is set to surpass Germany and Japan to become the world's third largest economy by 2027. India is already the third largest economy in the world in terms of PPP GDP with a huge GDP of $11.7 trillion, and by 2030, India's nominal GDP is expected to be $8.5 trillion, but India's potential is much more than this. After the USA, Russia and China, the Indian military is the fourth most powerful military in the world, and with a budget of $76.6 billion, India has third largest defense budget in the world. Over 1.45 million active personnels, over 1.15 million reserve personnels, and over 2.52 million paramilitary, the Indian military is the largest military in the world with a total 5.13 million military personnel. India is also a nuclear-armed country. The country is holds some of the most powerful nuclear weapons in the world, such as intercontinental ballistic missiles, Agni 5, Agni 6, K5 and K6, which has a massive range of 5,000 km to 12,000 km. Even some experts say that India hidden a dangerous weapon called Agni 7 or Surya, which has a massive range of 12,000 km to 16,000 km. There are only 4 countries in the world that have anti-satellite weapons, and India is one of them. India has capability to destroy the communication system of any country in the world by destroying their satellite in this space. The Indian Space Research Organization (ISRO) is among the world's top 5 most successful space agencies. ISRO has successfully launched over 386 foreign satellites for 36 different countries, including satellites of USA, Germany, France, and the UK, and successfully launched over 134 Indian origin satellites. There are many misconceptions about India have been born in the world.
especially in the West, and that's why many people make the mistake of underestimating India. For example, in 2013 when India announced that India will also send its satellite and rover to Mars, the New York Times made fun of India like this. But after in just 1 year in 2014, India became the first country in the world to reach Mars in the first attempt. And just few years later, in 2017, India created an incredible world record by launching 104 satellites from a single rocket, and then India made fun of New York Times like this. This is called sweet revenge. India is among the world's 4 countries that have successfully reached Mars and Moon both. Other are USA, Russia and China. And among the 5 countries that have their own GPS navigation system, other are USA, Russia, China and Japan. After USA and China, India has third highest number of billionaires in the world. As of 2022, India has total 237 billionaires. The Indian stock market is the fastest growing major stock market in the world. Even 2 out of the world's 10 largest stock exchanges are Indian. And India is said to be world's third largest stock market by 2030 with a total expected market cap of over $11 trillion. The world's fastest growing startup ecosystem. In 2014, India had only 400 startups, and as of 2022, India has over 77,000 startups, which makes India globally the third largest startup ecosystem in the world after USA and China. As well as India has third highest number of unicorns in the world. The country is home to the 108 unicorns with a total valuation of $341 billion. India is already among the top 5 most industrialized countries with a total output of $900 billion, and it is said to be third most industrialized country by 2030 with an expected industrial output of more than $3 trillion. Currently, all medicine in the UK are supplied by India. It is difficult to imagine how world would be able to combat AIDS without India, because globally over 80% of antiretroviral drugs which is using to combat AIDS are supplied by India. Known as the potential superpower, India is the second most populous country in the world and its potential is unlimited. The country has largest young force in the world, more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% of its population below the age of 35. And this young power is helping India to become an economic superpower like USA, China and European Union. But still, if you think that India is a poor country, then let me tell you that Indian household own the largest amount of gold, 25,000 tons to 30,000 tons, which is worth over $1.5 trillion to $2 trillion, and it is more than the economy of Australia, South Korea and Italy. Even Indian temple alone have 4,000 to 5,000 tons of gold, which is worth more than $300 billion and is more than the economy of New Zealand and Finland. Indians are just love golds and jewelry, and that's why India is the biggest consumer of gold, silver, jewelry and gems.
Many people in the world, mostly in the West, use HDI and per capita to criticize India, but they forget that India is the fastest growing major economy in the world. Currently, India's HDI is considered in the medium category, which is expected to move to the high human development category by 2025. Even today, 14 Indian states are comes in the high human development category and 13 Indian states are very close to achieve this. And many Indian states have more GDP per capita than the per capita of many European countries. Well, India is 7 to 10 times cheaper than the Europe and America. India is just like China. As China developed itself in the past, today India is developing in the same way. According to recent UN study, the country has lifted more than 415 million people out of poverty since 2005, and according to World Bank, poverty in India has reduced by 12.3% between 2011 to 2019 from 22.5% in 2011 to only 10% in 2019. And according to recent study of IMF, India has almost wiped out extreme poverty. The percentage of people living in the extreme poverty in India is only 0.8% now. The country is home to the rich culture and spirituality. No country in the world as diverse as India. There are 28 states and 8 union territories in India, and they all have their own culture, music, languages, dresses and food. And no country in the world is more colorful than India. Even India has entire colorful cities like Jaipur, the city of pink, Udaipur, the city of white, Jodhpur, the city of blue, Jaisalmer, the city of gold, and Kanyakumari, the city of 7 colors. India is the whole world itself. India has snow like Greenland, beauty like Switzerland, desert like Arab, wildlife like Africa, beautiful cities like Europe, forest like Brazil, and mountains like Japan. Even India has a white desert also. 100,000 of beautiful temples, historical monuments, incredible architecture sites, extremely beautiful hill stations like Manali, Nainital, Simla and Spiti Valley. India is just incredible. India is transforming itself as global economic powerhouse. The country is home to the highest number of under construction mega projects in the world. Project Bharatmala cost $140 billion. Project Sagarmala cost $130 billion. Project DMIC cost $100 billion. Projects 100 Smart City cost $100 billion. These are few big projects out of them. As well as the country is spending a massive amount of $1.5 trillion to modernize and develop its infrastructure. Along with this, seeing the growth of country's urbanization, India is also creating many new and futuristic cities like Gift City, Dholera SIR and Amravati Smart City. The fastest growing major economy, the fastest growing major stock market, the fastest growing startup ecosystem, healthcare, technology, infrastructure and industries. India is performing excellent, and this is what the world should know about India. तो वीडियो वॉच की भाई बहुत जितना जितना ज्यादा इंडिया को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं ज्यादा आंखें खुलती जा रही हैं और वाकई ये ऐसे अनसीन ट्रूथ है कि पूरी दुनिया को इसके बारे में नहीं पता था। और इतने खूबसूरत खूबसूरत सिटीज से खूबसूरत हमने तो ज्यादातर जितनी वीडियोस की है वो मुंबई के ऊपर की है, लेकिन इतनी खूबसूरत खूबसूरत सिटीज कलकत्ता, दिल्ली और पुणे, इतनी जबरदस्त बिल्डिंग्स थी। तो जैसे शुरू में इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया था जो इंडिया का, तो वैसे हम वैसे इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन न्यूज में जो है ना, जो बाहर की न्यूज होती है बीबीसी वगैरह ना, वो जो बैड हिस्सा होता है ना आपके मुल्क का वो दिखाते हैं। मतलब जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो या विलेजेस वगैरह हो, जो बहुत लोअर तबका वाला होता है ना, वो दिखाते हैं कि ये इस कंट्री के हालात है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क की दिखाएंगे या किसी और की दिखाएंगे, वो मतलब इन जिनको नहीं लाइक करते या जिनकी नहीं दिखाना चाहते वो नहीं दिखाते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेस्ट चीज है ओटीटी प्लेटफॉर्म के, आप अपने मुल्क की अच्छी चीजों को हाईलाइट करो। मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें इंडिया ने प्रोग्रेस नहीं की है, चाहे वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो और स्पेस से रिलेटेड हो, मेडिसिन हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम हो। सबसे ज्यादा हुआ यूके में भी और यूएसए में भी जो है वो इंडिया की मेडिसिन, यूएसए में तो 50% है, यूके में फिर थोड़ा कम है। तो बड़ी बात है कि मतलब वो इंडिया से जा रहे हैं जो सुपर पावर है वो भी इंडिया से जो है वो मेडिसिन जो है वो ले रहा है। तो
मतलब कि इतनी ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं इंडिया की, जो मेक इन इंडिया है वो इतनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मतलब फर्स्ट पे जो है वो इतनी ज्यादा चीजें हैं, जो सेकंड लार्जेस्ट चीजें जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो थर्ड लार्जेस्ट, वो मतलब कि कुछ तो बचा है ही नहीं। मुझे तो कुछ उसमें से लगा नहीं कि कुछ बचा है। अगर 2 व्हील्स को ले लो, वो मेरे ख्याल में उसमें नंबर 1 पे है 2 व्हील्स और इस टाइप की चीजों में। तो मतलब हर चीज में, मेडिसिन को ले लो, मतलब हर चीज में, स्टार्टअप इकोसिस्टम को ले लो। जैसे वो एक कंट्री मजाक उड़ा रहा था कि मार्स पे सबसे पहली उसमें मतलब यूएसए वाले उड़ा रहे थे। हाँ पहले ही उसमें गए हैं, हाँ, मार्स पे इंडिया पहुंचे, नहीं है। हाँ पहले ही टर्न में। तो तो वो उसमें मजाक मजाक उड़ाया। उड़ाए थे, लेकिन वो उन्होंने इंडिया ने कर दिखाया कर वाकई। दिखाया भाई, वही ना, यूएसए जो है वो पावर सुपर पावर है, तो वो कैसे वो किसी की जो है वो तरक्की को बर्दाश्त कर सकते हैं, या उन्होंने जो अच्छा काम किया वो कैसे अपने दिखाएगा न्यूज में। उन्होंने तो बुरी बुरी चीजें दिखानी है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इंडिया ने वाकई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है जब से 1947 से लेके अब तक। उनकी पॉवर्टी का वो जो है लेवल, वो भी सबसे गरीब मुल्क था उस टाइम। हाँ, और जो एक्सट्रीम है वो भी वो 1 भी पॉइंट से हाँ, कम है, वो कम है, 0.8 हाँ है। कुछ है, 0.8 है। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा तरक्की करना इतने और इतने बड़े मुल्क में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, सिर्फ बहुत 10% लोग हैं जो गरीब है, गरीब है। और उनमें से भी जो एक्सट्रीम लेवल के गरीब हैं वो 1% भी नहीं है। लोग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता और कमिंग जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, और कमिंग ईयर्स में मुझे लग रहा है 30 तक तो 0% हो जानी है। ये हाँ, बिल्कुल 0% में चली जानी है ये जो पॉवर्टी रेट है, और एक्सट्रीम तो किसी ने रहना ही नहीं है, जिस हिसाब से भाई इंडिया तरक्की कर रहा है। और रात के टाइम जो बिल्डिंग्स का व्यू Oh था वो तो my बहुत ही God. जबरदस्त था। ऐसे लग रहा था जैसे वाकई हमको जो है बाहर की किसी कंट्री का देख रहे हैं, इतनी बिल्कुल ऐसे लग रहा जबरदस्त। और खासतौर पे जो मैंने पुणे की हमने बिल्डिंग्स देखी थी, वो एक बिल्डिंग बहुत ही जबरदस्त थी। लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये मतलब बाहर की लग रहा था कि बिल्डिंग है यहाँ पे नहीं भाई, एशिया अब तो में मेरा नहीं हो दिल करने सकती। लग पड़ा है कि इंडिया सारे सिटीज को एक्सप्लोर करने का, और मतलब ऐसे तो वीडियो बना के देखने का भी दिल कर रहा है, लेकिन खुद से जाके भी जो है ना इंडिया एक्सप्लोर करने का दिल कर रहा है। एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था कि आप आ जाए इंडिया, आ जाए। कैसे आए इंडिया? नहीं आ दुआ सकते। करें आप लोग भी, हम लोग भी, कि हालात जो है हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो ठीक हो, तो जो है फिर लोग जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे ना भी ठीक हो, आना जाना तो खुले यार। गवर्नमेंट लेवल पे ठीक होंगे तो आना जाना खुलेगा ना। ये तो ठीक होने वाले नहीं है, हाँ, क्योंकि तो आप बस लोगों को भी पता है कि बहुत पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो ये तो सेट नहीं, मुझे लग रहा है दोनों कंट्रीज ही नहीं एक बात को मानने को तैयार, तो दोनों साइडों पे ही है ऐसा। तो ये तो जैसे हैं वैसे ही रहने हैं, इनका मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन निकल फिर रहा हम कभी इंडिया नहीं आ सकते है ना। हम कभी नहीं आ सकते यार, ये तो गलत बात है। आप लोग एहतजाज करो कि हम हमारे लिए। खैर, ये थी आज की वीडियो। हमने बहुत ज्यादा एंजॉय की इंडिया को एक्सप्लोर करके, तो बहुत मजा आया। हाँ, ऐसी कोई कुछ और वीडियोस भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंडिया के बारे में बताया गया हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दे हमें इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।